articles and pronouns. Okay, so today we have to do articles and pronouns. So for that we have, okay class, so first let's watch a video about articles. आपको भी पता है articles क्या होते हैं, but let's revise it and after this we will do exercise. Skip. Janet is here. What is happening? Okay. Articles. A. And the. Look at these pictures. This is a flower. The flower is red. This is an orange. Okay, class, in short, I will explain you. We have three articles, definite and indefinite. So, definite We article have used a is the, and indefinite and articles. the to point out the nouns flower and orange. These words, that is a and the, used to point out nouns are called articles. Okay, class, articles हमेशा noun के साथ आते हैं. Okay, a, and the. A और an नॉन स्पेसिफिक थिंग्स के साथ आता है, नॉन जो पर्टिकुलर नहीं होती, स्पेसिफिक नहीं होती, प्रॉपर नाउन्स नहीं होती, कॉमन नाउन्स के साथ आता है. द विल ऑलवेज कम विद प्रॉपर नाउन. Before a word that begins with a consonant. ओके, अब हम उन वर्ड्स के साथ लगाएंगे जो इन वर्ड्स से बिगिन हो. ओके मिस, दा कहाँ पे लगाएंगे? इस नेचुरल थिंग्स के लिए मिस दा को किसी जैसे कोई इम्पोर्टेंट नाम जगह लगाएंगे. A beetle, a deer, a pearl. मिस दी कहाँ पे लगाएंगे? मिस स्पेसिफिक थिंग्स के साथ. Okay, for example, a cow, a beetle, a deer, and a pearl. मैं टीचर से पूछ रहा हूँ. आज नेटवर्क को क्या हो गया? Okay, class. In short, we have understood the will be used for particular things. So let's start doing exercise. हम exercise करते हैं. So this is our first exercise page that we will do. Articles, mixed articles exercise number 1. Here we will put mixed articles. Okay, for each blank space, choose the proper article, a and the or no article. Yes. Miss, you will send this Any file question? in the group.
We use an before a word that begins with a vowel sound. इसको स्टॉप ही कर देते हैं. ओके क्लास, तो हम लोग ये करते हैं. So number 1, I moved to dash USA when I was 15 years old. So class, tell me which article is suitable for first blank. कौन सा article suitable है first blank में? Miss the No article. Not da. Yes yes miss the class. No article. Miss, which is right option? Okay, let me tell you. I moved to USA. It's United States of America. We Besides said no always article. put the with any states, with number of states. For example, it's ये United इंटरेस्ट States of America, है. USA. So इसके ये कॉमन नाउन तो है नहीं. So तो आएगा ही नहीं. So no article भी नहीं आएगा. I moved to the United States of America और I moved to USA. No. अगर यहाँ पर पूरा लिखा होता ना United States of America, फिर यहाँ पर द आना था. But here no article will be used. I moved to USA when I was 15 years old. So first में कोई article नहीं आएगा. नेम ऑफ मंथ लिखो. का टेस्ट आया. वो Okay. लिख दे. Okay, next. इधर ही. नेम ऑफ I can spell as well as dash most students. I can spell as well as the most students or most students or a most students. क्या आएगा? Miss what? miss the Miss the. Yes class. So the most student हमेशा superlative degree के साथ क्या आता है? The आता है. So it's the most student. Yes, miss. Okay, next. He is dash most famous actor I know. He is the most famous. He He is is the. the most famous actor I the know. The. famous Hurry up, we The. don't have dash lot of time. Hurry up, we don't have a lot of time. A lot of We time. don't So यहाँ have पर क्या a आएगा? lot of time. आएगा. I live around here. I live in dash neighborhood. I live in a The. neighborhood. I live in the neighborhood or I live in I live neighborhood. यहाँ in पर कोई the article नहीं neighborhood. आएगा. I live in neighborhood simply. Okay. So next. I don't know at all. I don't have dash A clue. I clue. don't have A. A. a clue. I don't have a clue. a So clue clue के साथ a A आएगा. clue. I have dash idea. I have an idea. Okay. Okay, class. So next, dash tea in my cup is too hot to drink. A tea. The tea in my cup is Tea too in hot. my The. cup or tea the tea. The. So यहाँ पर टी के साथ ना अ आएगा ना द आएगा. There would be no article. The U.S. president Miss the आएगा. lives in dash White House. The U.S. president lives in the White House. White House Miss is a proper ये. noun. The White Miss. House. Miss. My parents live in a dash in dash house. Lives in A a White house. House. ठीक है? Miss. क्योंकि ये दूसरे वाला White House कॉमन है. Miss. सो दिस इज द आंसर की मैं आपको ये व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी. आप दोबारा इसको सॉल्व करके दोबारा इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको Miss. घर में. Miss. ओके क्लास. सो हियर इज समथिंग दैट वी कैन रीड आउट. Miss. देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस. मैं आपको ये भी सेंड कर दूंगी.
Miss, Okay, the indefinite article a or an. Indefinite article कौन से होते हैं? A and an. When we talk about something in general, जब हम कोई भी चीज़ generally बात करते हैं, उसके साथ क्या आता है? A और an आता है. For example, there are examples. Definite article कब आता है? When we talk about something unique, something particular, something special. Okay, and there are rules also. Class, do you know articles के भी rules होते हैं कि किसके साथ article आएगा, किसके साथ नहीं आएगा. So Miss, how you will here, tell us? with the names of mountain ranges, these are the rules. कि mountain ranges के साथ आ सकते हैं ocean, seas, rivers, deserts, and the Alps, the Himalayas, the Atlantic. These are examples. The Mediterranean Sea, the Amazon, the Nile, the Thames, the Sahara Desert, इन सब के साथ names of a river, mountains, इन सब के साथ क्या आता है? Article आता है. With groups of islands, states, countries, जब भी कोई islands हो, states हो, countries हो, उनके साथ आता है the United States of America. जब पूरा United States of America लिखा होगा, then we can say that then we can put the. But अगर just USA लिखा होगा तो उसके साथ the नहीं आएगा ना a आएगा. With musical instruments, कोई भी musical instruments हो उसके साथ the आएगा. I can play the guitar, I can play the violin, the piano, the flute, etc. Okay, class. Next. Okay, miss. So हाँ. Before the name of streets, squares, before the words church, school. So ये सारे rules आपने पढ़ लेना है, ठीक है? क्योंकि आज Friday है, so we don't have so much time. हमारा time क्या है? मैं check करूँ. मिस तो अभी बाकी के वो Okay. So our lecture exercise will be दिखाते हैं. over at miss, our yes. lecture is over. Lecture over होगा हमारा 10:30. 10:35 पे. So 3 minutes are left only. So class, I will send you this. आप इसको go through करिएगा. You can read it out and you can solve it out for practice. आप इसको solve करें. इसके Miss, ऊपर you will ही send all solve कर these लें. ये नहीं ज़रूरी नहीं है exercise. कॉपी पे लिखें. जस्ट इसको वैसे इसको रीड आउट करके आपको पता चलेगा, आपके आर्टिकल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. आर्टिकल मिस ग्रिप एक बार आप दोबारा दिखा स्ट्रॉन्ग हो देंगी. जाएगी. बिकॉज वन से मैं. समटाइम्स कोई ऐसे सिचुएशंस आ जाती है, हमें नहीं पता चलता यहाँ आर्टिकल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए. So it's important for you. Next thing is pronouns. We will do that next time. And now it's time. check कर लूँ कौन कौन present है. मिस आप जल्दी सेंड कर देना. Okay, ईमान grade 6. मैं आपको लेक्चर भी सेंड कर दूंगी. लेक्चर सेंड करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको PDF फाइल ज़रूर सेंड कर दूंगी जो हमने आज की है. Okay, attendance. Class, do you have your English B book? यस. Yes, miss. आपने इंग्लिश बी बुक बाय की हुई है? यस मिस. मिस इंग्लिश बी की बुक का नेम है ग्रामर ट्री. ओके. सो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि डायरी में वो इंग्लिश बी के पेजेस क्यों नहीं मेंशन कर रहे. इंग्लिश बी की हमने बुक को कुछ भी नहीं किया. तो आप ऐसा करें कि इंग्लिश बी का जो आर्टिकल वाला जो चैप्टर है ना, वो उसमें एक्सरसाइजेज होंगी. 2-3 एक्सरसाइजेज हैं, आई रिमेम्बर, ग्रेड 6 में. सो आप वो उसको उसको बुक के ऊपर सॉल्व कर लें. ठीक है मिस. और अगर नहीं आएगा तो मुझे पेजेस सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको उसकी आंसर की आपको सेंड कर दूंगी. Okay, miss. Thank you. ओके मिस. Thank you, मैं miss. स्मॉल. मिस मे मलिक Who मोहम्मद is Sara सहर. Ahmed? शी इज नूरिया. Nuria.
And class from Monday onwards we will have English class daily. One English class daily हुआ करेगी and we will have lot of work to do that time. रोज क्लास हुआ करेगी हमारी and lecture रोज आपकी क्लास हुआ करेगी और लेक्चर भी बढ़ गए हैं. एवरी डे आपकी सारे लेक्चर्स हुआ करेंगे आई थिंक. इंग्लिश का तो रोज हुआ करेगा. सो क्लास मैं रिकॉर्डिंग बंद करने लगी हूँ. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम on Monday.